Good morning, all of you. Today we are discuss about the rest of part of the previous class. We already discussed about atom, but today we atom or what is electrical material, conducting material, yeah, semiconductor material, yeah, insulator. In already we have discussed about previous class, but the definition of all of these is I told in this class. The atomic structure at first we are discuss about atomic structure. Atomic structure is the very important part of electrical engineering because the atom is the element which is takes part in the chemical reaction and is known as atom. At first, an element of defined as the substance which cannot be decomposed into other substance. The smallest particle of an element which takes part in the chemical reaction is known as atom. All matter is composed of atom which are all atoms are made of electrons, protons and neutrons. The three part is the most important in this atom. The proton and neutron on we are see in previous class. The प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ऑन न्यूक्लियस पे रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर का जो ऑर्बिट जो है न्यूट्रॉन ऑलवेज बिलोंग इन ऑर्बिट सेक्शन. हाँ, ऑर्बिट सेक्शन पे कैसे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है ना 2n², ये फॉर्मूला फॉलो करके ये सब ये होता है. तो सो द नाउ we obviously all atoms are made of electrons, protons and neutrons. ये तो है ही, और ये भी है most solid materials are classified from the standpoint of electrical conductivity as a conductor, semiconductor or insulator. The conductor, the substance must contain some mobile electrons on that can move freely between atoms. These free atoms come only from the valence orbit of the atom. Conductivity depends on the number of electrons in the valence orbit. Now, this is what is the valence band actually, or valence electron. On when we are written this part, then we write this part. We can write or written this part. The energy level of an electron increase as its distance from the nucleus increases. Thus, an electrons in the second orbit process more energy than electron in the first orbit. फर्स्ट ऑर्बिट से भी ज़्यादा जब एनर्जी वो गेन कर लेगा तो तब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट पे आ सकता है.
ठीक है. Electrons in the third or last orbit will be processed very high energy. This energy electrons are less bound into the nucleus, and hence they are more mobile. It is the mobility of the last orbit electrons that they acquire the property of combining with the atom. Further, due to this combining power of last orbit electrons of an atom, they are called valence electron. Valence electron actually atom this is coded the coded part, and now we are discuss about the part of atoms in detail. In detail means when you face the exam in multiple choice type question, this is very important part, important part, that is the electron. What is the electron? Mass of electron is the 9.11 into 10 to the power minus 31 kgs. ये भी तुम लोग बोल सकते हो. और ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहेगा, देखो ये जो atoms will fewer than 4 or the valence electrons are good conductor, or the atoms will more than 4 valence electrons are poor conductors. Atoms with 4 valence electron on the 4 valence electrons are semiconductor. Sorry for interruption. And the atom will with few than 4 valence electrons are good conductor. Now we are discuss about the charges of electrons is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. The diameter of electrons of an electrons is equal to 10 to the power minus 15 meter. Next we are discuss about the proton. So mass of proton is equal to 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs. Charge of proton is equal to plus 1.602 into 10 to the power 10 to the into 10 to the power 19 coulombs. The proton का actually proton have the positive charge, so प्रोटॉन का जो चार्ज जो नंबर मैंने बोला वो पॉजिटिव पे बोला, वही एक ही है, बट नेगेटिव पे है इलेक्ट्रॉन का चार्ज. थर्ड वन is a neutron. The mass of neutron is equal to mass of proton. That means is equal to the 1.67 into 10 to the power minus 27 kgs. Charge of neutron is equal to nil. Diameter of nucleus of the other of 10 to the power minus 15 meter. Diameter of orbits is equal to 10 to the power 4 times of dia of molecules. देखो ये जो भी मैं बोल रही हूँ, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, ये मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एक्चुअली अलग अलग से मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एकदम जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है तो वो ही मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है,
तो normally the atom are electrically natural, and the number of electrons and protons charge attract each other. The electrical force of the protons hold the electrons in their orbits. Like electrical charges repel each other, so negatively charged electrons will not collide with each other. Now we are discuss about the positive ions and negative ions. What is ions actually? The ions means actually ions is the matter of electrons. When an electron is removed from natural atom, this atom becomes positively charged and is called positive ion. Whenever if an electron is added to natural atom, it becomes negative charge and is called the negative ions. That means क्या है ना, that means इलेक्ट्रॉन ऐड होने से वो इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम पे जाएगा, किसी एटम को छोड़ कर जाएगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ ना, वो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव आयन हो गया अदर देन जो एटम जो है उसके हिसाब से. तो सो वी आर so this is the fact, this for the positive ion and negative ion. Now we are discuss about the electric current, and the definition of electric current is the controlled movement of electrons or drift through a substance is called current. Current is the rate at which electrons moves. 1 amperes unit or current represents 6.28 into 10 to the power 18 electrons passing a point each second. each second 1 कूलम फास्ट. देखो मैंने पहले भी पिछला जो कोई क्लास था, प्रीवियस क्लास में मैंने बोल दिया व्हाट इज़ द कूलम्स लॉ के बारे में मैंने बोला, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल करंट. तो जब एक कोई कंडक्टर के अंदर से जब 1 कूलम चार्ज जब पास करेगा ना, 1 कूलम जब पास करेगा 1 सेकेंड पे, तो वही हो गया जो करंट, ठीक है, 1 एम्पेयर करंट. तो एम्पेयर इज इक्वल टू क्या है ना, कूलम पर सेकेंड. तो 1 कूलम इज इक्वल टू क्या है ना, चार्ज ऑफ 6.28 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हुआ. अच्छा, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? Electromotive force means the EMF is the force that causes a current of electricity to flow. The potential difference PD मतलब जो voltage जो है, potential difference between 2 points in a circuit is the electrical process. So or voltage requires to drive the current between them. The voltage is a unit of potential difference, and electromotive force in it is defined as the difference of potential across the resistance 1 ohm carrying a current of 1 ampere. देखो यहाँ पे वोल्टेज का भी डेफिनेशन मैंने बोल दिया. 1 वोल्ट मतलब क्या है ना, एक कंडक्टर के थ्रू एक
1 ओम रेजिस्टेंस है और वहाँ पे 1 एम्पेयर करंट वहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ना, उसको हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे ना, वो है 1 वोल्ट। ठीक है, इसके बाद मैंने बोलूँगी एक, यहाँ पे मुझे तो थोड़ा ड्रॉ करना ही होगा। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, वो जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का जो डिफरेंस जो है ना, ये जगह का जो डिफरेंस है, तो मैंने बोला वो जो डिफरेंस है 5 ईवी और 1 ईवी और 0.75 ईवी जो भी हो सकता है, ये इसको मैंने ईवी से, ये जो एनर्जी गैप जो है और एनर्जी बैंड जो है, तो ये जो इसको हम लोग डिनोट करेंगे ईवी से। ठीक है, तो द डेफिनेशन ऑफ ईवी हम लोग ये बोल सकते हैं, we are discuss about electron volt. Electron volt means electron volt is a unit in terms of which the energies of atomic particles are expressed. It is the work done when an electron whose charge is E coulomb is moved in an electric field through a potential difference of 1 volt against the force. Force means neutrons action on the charge. So we obviously told the thus 1 electron volt is equal to E joules. Next we are discuss about resistance. What is resistance? Actually तुम लोग ये you are also ये रिमेंबर के लिए तुम लोग बोल सकते हो, ये जान सकते हो, और खुद के लिए ये एक्चुअली बोल सकते हो, जो वो जो रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट काम करेगा, वो उसका काम ही है, इलेक्ट्रॉन का जो काम है वहाँ पे बाधा डालना। ठीक है, तो इसीलिए इसका एनिमी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? द ऑपोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स due to bonds between protons and electrons as well as two the oscillations is called an electrical resistance. Now now the resistance may also be defined as the property of the electric circuit which opposes the flow of current. Clear? The properties of the electric current which opposes the flow of current, that is called resistance. The practically the unit of electrical resistance is ohm, ohm. ohm, and this is the symbol of resistance. So now we are discuss about the law of resistance. Law of resistance means resistance कैसे चलता है, कैसे काम करता है, ये सब। हाँ, तो ये इसका रिलेशन कैसे है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पे we are already discuss about the electrons movement और इलेक्ट्रॉन्स का जो भी जैसे चलता है, कैसे वो बिहेव करता है, वो सब हम लोगों को पता चल गया। तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में, द बिहेवियर ऑफ रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू लेंथ एंड एरिया, we are discuss the law of resistance. The law of resistance number 1 is length के साथ directly proportional resistance, directly proportional and cross sectional area के साथ क्या है ना, inversely proportional of the cross sectional area.
नेचर ऑफ द मटेरियल, एक्चुअली हम लोग ऐसे तो ये जो हो गया तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं जे वी कैन राइट आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. So now we see that the proportionality. So absence of proportionality in the we write these things. That is rho. प्रोपोर्शनलिटी के जगह पे यहाँ पे हम लोग जब इक्वल यूज़ करेंगे तब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा. दिस इज़, ये जो कांस्टेंट है ये वेरी ऑफ टाइप्स मटेरियल के लिए वेरी ऑफ टाइप्स रो हो सकता है. तो रो मीन्स रेजिस्टिविटी, रो मीन्स रेजिस्टिविटी which is the specific resistance भी बोल सकते हो, which is called specific resistance, where rho is known as specific resistance or resistivity. Specific resistance or resistivity of a material may be defined as the resistance between the opposite forces of a material meter cube of that the material. So the unit of resistivity is rho meter. ठीक है, ओहम मीटर. Clear? Now we are discuss about the conductance. Actually I always says that the conductance is the friend of electrons, which is and the reciprocal so the reciprocal relation of the resistance and conductance is a reciprocal relation. So ये जो है ना, so reciprocal resistance है ये conductance के साथ. तो what is conductance? Conductance is the reciprocal of resistance Z is equal to 1 by R. So the relationship of the A and L, यहाँ पे तुम इसको भी ऐसे लिख सकते हो जैसे ये G के साथ क्या होगा ना, A by L. ठीक है, और यहाँ पे जो इजिकल टू जो हो जाएगा जब ये जो, तो सो द कांस्टेंट विल बिकम, कांस्टेंट क्या है ना, सिग्मा है कांस्टेंट, तो सिग्मा के साथ ये रहेगा. तो यहाँ पे ये जो सिग्मा जो है that is called the reciprocal of specific resistance. So we are mathematically we are right that sigma is equal to 1 by rho of a material is called the conductivity. The unit of conductivity is mho. Actually conductivity, the unit of conductance, unit of conductance is opposite of rho. यहाँ पे ओहम, ये इसका स्पेलिंग क्या है ना, OHM, और यहाँ पे इसका यूनिट क्या है ना, MHO मीन्स मो. दिस इज द conductance of
unit of conductance. So the conductivity unit of conductivity is mho per meter. The unit of conductivity is the mho per meter. The next topic is the temperature or coefficient of resistance. Actually, temperature coefficient are two types. One is the positive temperature coefficient and another is the negative temperature coefficient. Actually, what is temperature coefficient? The definition of temperature coefficient. Temperature coefficient of a resistance at 0 degrees Celsius may be defined as the follows. The charge in resistance per ohms for charge in temperature of 1 degree Celsius from 0 degree Celsius over large temperature range of the simple formula RT. एक्चुअली फॉर्मूला मैं यहाँ पे I can write the formula temperature coefficient का यहाँ पे RT is equal to R0 1 plus alpha t. Actually this is the temperature coefficient, the formula. The temperature coefficient, the effect of temperature coefficient on resistance. The following points are nothing. The resistance of a material conductors increase with the resistance of temperature. The rate of the increase is very considerable for most pure metal, another being as much as about 1 by 1.50 of the total resistance for each centigrade rise. In the case of iron, that effect is smaller in case of alloy, and very small indeed of materials such as the manganese and constantan, which are therefore very suitable for making standard resistance. The point number 2 is the resistance of semiconductors such as carbon and all electrolytes decrease as the temperature rise, means alpha being negative. तो मैंने बोला ना जो वहाँ पे क्या है ना, दो तरह का एक्चुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट है. वन इज़ एक्चुअली negative temperature coefficient and another is positive temperature coefficient. Now we are discuss about Ohm's law. Ohm's law is the very important part of the electrical engineering or physics. तुम लोग बोल सकते हो. What is Ohm's law? Ohm's law can be stated as follows. Also, for a fixed metal conductor, the temperature of other conducting remaining constant, the current I it is proportional to the potential difference V between its end. In other words, V by I is equal to constant और V by I is equal to R भी बोल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट जब कांस्टेंट आएगा जब प्रोपोर्शनलिटी वहाँ से हटा दिया जाएगा. ठीक है. उसके बाद देखो बहुत सारा यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को प्लीज़ नोट डाउन कर लोगे
क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छोटा छोटा यहाँ से प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे यहाँ पे पावर दिया हुआ है, जैसे P इज इक्वल टू पावर इन वाट्स, V इज इक्वल टू वोल्टेज इन वोल्टेज इन वोल्ट्स, also I is equal to current in amperes and R for the resistance. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो दो जो फॉर्मूला जो है ना, ये फॉर्मूला से सब कुछ आ रहा है। ये जो दो जो फॉर्मूला है, ये जो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। This is a very important formula, and another is the Ohm's law, means V proportional to I. So remove the proportionality, then V R comes absence of R comes absence of proportionality. So this is the very important the formula, this and this also. But we are the rest of जो भी यहाँ पे फॉर्मूला है, ये सब हम लोग ये दो फॉर्मूला से हम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। तुम लोगों को देखोगे इसको फॉर्मूला को एक बार स्टडी करके देखोगे तो देखोगे ये सब फॉर्मूला ऐसे ही आ रहा है, ठीक है।